part of the program your variable is accessible and how long it is accessible. That means life of that variable, कितने देर तक वो access हो सकता है programming में. अगर ये programming 24 hours चलेगा तो कितने देर तक access हो सकता है. It will active for 24 at the end of the program or for certain period that is defined under storage. Extend. Besides, there is another keyword type def, though considered as storage class, but it doesn't define any storage for the variable. I repeat, though type def is considered as storage class, but it doesn't define any storage for the variable. I repeat, remember this, type def is considered as a storage class, but it doesn't define any storage for the variable. That's why there are four, yes, there are four storage class specifier: auto, static, register, extend. We have discussed this thoroughly, except the last one, extend. Today we'll discuss 3-4 example from extend. Let us start from the very first example of extend. And here is the first example in front of your screen. This is a very small example. Guys, see, most of the time in PI, in personal interview or in technical interview, interviewer may ask you, can you tell me what is the difference between declaration and definition of variable? We know declaration of function, definition of function. There are two separate things. Declaration is a one-line statement ended with semicolon. Definition is a set of statement written inside an independent block. But as far as variable declaration is concerned, declaration and definition are two separate things. So what is declaration? What is definition? Let us discuss it and with the concept of extend. See here in the line number 4, extend. Guys, my screen is visible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Number 4, extend intj is written, that is known as declaration. So let me clarify what is declaration as a variable. Variable declaration क्या होता है? Function declaration सबको पता है, फिर भी we will discuss function declaration. But as far as variable is concerned, what is declaration? जैसे function में declaration होता है, वही concept variable में declaration होता है. अगर declaration दोनों में same है, तो definition क्या है? Definition, as far as variable is concerned, definition means where memory is occupied, but in declaration memory is not occupied. Declaration definition के अंदर यही basic difference है. Declaration में only prior information given to the compiler. There will be a variable j which type is integer, right? Guys, आप लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़े होंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर मरीस मानो का बुक पढ़े होंगे या और एक बुक आप लोग पढ़े होंगे. उसमें था एड्रेसिंग, मेमोरी एड्रेसिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े थे फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस. Could you recall this physical address, logical address? You just recall. इसीलिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है, जो ओनली सी पढ़ेगा उसको ओनली सी आएगा, लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन कनेक्ट ऑल दिस कंसेप्ट विद द आर्किटेक्चर्स. आर्किटेक्चर के साथ कंप्लीट कंपेयर कर सकते हैं. कोई पीजीडीसीए करके नहीं बता सकता जे ये कैसे रिलेट करता है फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, अगर वो आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा हो. तो आप लोग आर्किटेक्चर इसलिए पढ़े हो क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलके इंटीग्रेट होके सिंक होके काम करता है. That is your hardware architecture and software architecture. There are two architectures are there. One is hardware architecture and the software architecture. Software architecture are defined under operating system. Hardware architectures are defined under BIOS and rest of the things inside microprocessor, processor, whatever it may be. Okay, let us go ahead. जब ये डिक्लेयर होता है तो एक लॉजिकल एड्रेस असाइन होता है. जब ये डिफाइन होता है, that logical address mapped to the physical address. That means where the actually memory is allocated. That means मैं उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके अगर आपको सही ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, you will try to connect with that example. देखिए, जब हम पिक्चर देखने के लिए डिसाइड करते हैं, हम 5 फ्रंट पिक्चर देखने के लिए डिसाइड किए. अभी हमने ऑनलाइन आपके जरिए 5 टिकट बुक कर दिया. दैट इज योर लॉजिकल एड्रेसिंग और लॉजिकल बुकिंग. आपको 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 चेयर आपने बुक किया. ठीक है, 5 चेयर बुक करने के बाद आपने ई टिकट जनरेट किया. उसको आप मोबाइल में लेके प्रॉपर टाइम में पहुंच गए सिनेमा हॉल में. तो सिनेमा हॉल गेट के पास जब आपको टिकट पूछा तो आपने मोबाइल में दिखा दिया. तो ये जो सीट आपने दिखा था ये लॉजिकल एड्रेसिंग था. अंडरस्टूड? तो दैट लॉजिकल एड्रेसिंग कब जाके कन्वर्ट होगा फिजिकल एड्रेसिंग को?
जब आप एंट्री करेंगे सिनेमा हॉल के अंदर, इफ दैट 5, 6, 7, 8, 9 are really free, then the person who is arranging or managing the seat inside the cinema hall will ask you, in this row which begin with 5, 6, 7, 8, 9, suppose out of 5, 6, 7, 8, 9, suppose some seat are damaged, so some seat are damaged. In that case, that manager in that cinema hall will request you, would you please don't mind, आप इधर इस लाइन को छोड़ के पीछे वाले या आगे वाले या साइड वाले रो में बैठ सकते हैं, उसमें 2 चेयर टूट चुका है, तो काइंडली आप इधर बैठ जाएंगे, तो सेम थिंग होगा, एक ही रो में थोड़ा सा आप राइट में बैठेंगे, ठीक है, आप नाराज होंगे लेकिन उसके बाद कोई चारा नहीं है, आप बैठ जाएंगे. दैट इज नोन एज फिजिकल एड्रेसिंग. दैट मींस एट द पॉइंट ऑफ द थिंग्स इज गोइंग ऑन, यू आर ऑक्युपाइंग द स्पेस. जब सिनेमा स्टार्ट हो रहा है, आप स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हो. उससे 2 दिन पहले 4 दिन पहले जो आपको सीट मिला था वो लॉजिकल एड्रेसिंग था. अंडरस्टूड? जरूरी नहीं है एग्जैक्टली वही सीट मिलेगा. 90% चांसेस आर देयर दैट सीट में बी अवेलेबल, उसी सीट आपको मिल जाए, या 99% गारंटी आर देयर. बट ऑपरेटिंग सिस्टम की केस में ऐसा नहीं होता है. लॉजिकल एड्रेसिंग जो होता है, एक लॉजिकली टेंटेटिवली आपको एक एड्रेस मिलता है, वही एड्रेस जरूरी नहीं है वही एड्रेस आपको एक्चुअल पोजीशन में मिलेगा जब आपका मेमोरी एलोकेशन होगा. तो मेमोरी एलोकेशन कब होता है ना, INT j इक्वल टू 5 जब आप लिखते हो मेमोरी. आप पूछेंगे सर अगर एक्सटर्न नहीं लिखेंगे तो व्हाट विल हैपन हियर? दिस इज डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन. रिमेंबर दिस गाइस, डिक्लेरेशन एंड ये दोनों है. आप पूछेंगे सर ये दोनों कैसे हो गया ना, if you don't write extern, then compiler consider INT j is auto variable, because by default all the local variable are auto variable, and by nature you know the auto variable is initialized to garbage. In this case, this is the only case declaration and definition takes place in the same line. The memory is allocated at the stack area because it is a local variable, and some garbage or unknown value will be initialized to j as far as some compiler is concerned, but in some other compiler 0 may be assigned. You know, C is heavily platform dependent programming language, right? But if you add extend, see here, you are clearly instructing compiler, this is just a declaration, don't allocate memory now. तो memory यहाँ पर allocation नहीं होगा until and unless this line is not executed. आप पूछेंगे सर ये तो main के बाहर है, तो कैसे ये link होगा? It is the job of linker. It is the job of linker to connect line number 8. Line number 8 means J to the block main. That means थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर पिक्चर करूं, ये अगर आपका मेन ब्लॉक है तो J जो वेरिएबल है, इट इज ए ग्लोबल वेरिएबल. अंडरस्टूड? तो J कैन बी नाउ लिंक टू दिस ब्लॉक. इस ब्लॉक का नाम क्या हुआ? मेन. Understood? Suppose besides that there is another block fun. There is another block fun. So same J can be also access to fun. अगर यहीं पर void fun आप डिक्लेयर करेंगे, guys I am writing in the mouse, तो थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा हैंड राइटिंग. void fun, तो यहीं पर अगर आप printf j plus 3 लिखेंगे तो which j will be accessed. उसके बाद j minus minus लिखेंगे, फिर printf j लिखेंगे, which j will be accessed. That global variable j will be accessed. That means for the function fun, j is a by default global variable. External keyword is not required. But for the function main, the external keyword is required with this syntax. Because int j equal to 5 is not by default global variable. Though it is declared outside main function, but it is declared after main. Main के बाहर declare हुआ है. Until and unless you will not mention external int j, linker won't link the variable j to the main block. Main block को link नहीं करेगा. Linking is important. Linking is the part of linker. तो linker का काम है link करना. Different code को different variable के साथ, different identifier को different memory के साथ, different memory means address के साथ assign करता है, linking करता है, right? That is known as linker. The job of linker. So here जो variable j main के बाहर declare हुआ था, now that is main now. Yes.
सर यहाँ पे जो एक्सटर्न जो लिखे है ना एक्सटर्न इंट जे लाइन 4 में सर वहाँ पे एक्सटर्न के लिए ही क्या इंट मतलब जे ग्लोबल वेरिएबल हो रहा है, एक्सटर्न अगर डिलीट कर देंगे तो जे ग्लोबल वेरिएबल नहीं रहेगा। If you delete extern, then by default it is a auto local variable. अच्छा सर, It is a by default auto local variable. We have already discussed. When you declare a variable inside a block without specifying any storage class, compiler automatically treat it as auto variable. And you know the auto variable declared in the stack area, which default value is garbage. But when you declared it as external variable, I think I have or we have discussed the concept of memory. One concept was, guys, can you please help me to recall? There are 4 different memory area. One is stack area, another is heap area. Discussion Code. sir, I actually joined new today. That's why sir I'm asking. Static area and another is code area or constant area. Can anyone help me to recall this concept? क्या हम ये concept discussion किए थे या नहीं किए थे? No sir. No sir. मुझे भी याद नहीं है. Let me tell you again. Understood? The entire memory area are logically divided into 4 parts. One is stack, another is heap, another is static, another is code area or constant area. Right? So let me give you brief idea about this 4 area. Stack area is there is no fixed area. The size of the stack area can be constantly changing during the execution of the program, right? Because it is the operating system who manages the resource. Resource means important resource of the your computer is memory. So entire memory को operating system manage करता है. So size of the stack constantly varying, right? The point is here, the stack area का काम क्या है? Now all the local variable, all the function call details stored in the stack area. Function call detail means function parameter, function call जब होता है उसका address. Understood? All the details of the function call local variables are stored in stack area. Heap area guys, you know it very well. क्योंकि आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हो, जब आप नोड क्रिएट करते हो तो malloc एंड calloc के जरिए मेमोरी एलोकेट करते हो. C++ में जब आप मेमोरी एलोकेट करते हो डायनामिकली, न्यू के जरिए मेमोरी एलोकेट करते हो, जावा में भी जब मेमोरी एलोकेट करते हो, न्यू के जरिए मेमोरी एलोकेट करते हो, वो मेमोरी कहाँ एलोकेट होता है? हीप एरिया में. That means all the dynamically allocated memory created in the heap region, allocated in the heap region. बाकी बताओ static area. Static area can hold all the global variable and external variable because by default all static variable and global variable. Now this is static variable global variables because guys you know there were 2 keywords. One is static, another is external. Besides auto, आप लोग गाइस आप लोग अटेंड किए थे लास्ट क्लास? आप में से जो Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. No sir. Yes sir. Yes sir. If you miss the No, class, sir. definitely miss the link. तो लिंक आपको मिस हो जाएगा तो you will definitely face difficulty in the next class. वीकली एक क्लास 2 क्लास हो रहा है. गाइस देखिए हम 4 कीवर्ड पढ़े थे. ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्नल. ऑटो रजिस्टर डिटेल डिस्कशन हुआ था, स्टैटिक के ऊपर भी डिस्कशन हुआ था, ओनली बचा था एक्सटर्नल. फिर भी मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया. तो स्टैटिक वेरिएबल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल ये कंप्यूटर की किस एरिया में क्रिएट होते हैं? रिमेंबर स्टैटिक एरिया में क्रिएट होते हैं. एंड जो ऑटो वेरिएबल है ये कहाँ पर क्रिएट होते हैं? ये आपका स्टैक एरिया में क्रिएट होता है. एंड जो बचा रजिस्टर वेरिएबल कहाँ पर क्रिएट होते हैं? सीपीयू के अंदर क्रिएट होते हैं. सीपीयू के अंदर रजिस्टर वेरिएबल क्रिएट होता है. रजिस्टर आई वेरिएबल विल बी क्रिएटेड इनसाइड सीपीयू रजिस्टर के अंदर क्रिएट होते हैं. बाकी आप पूछेंगे सर हीप एरिया में कौन सा वेरिएबल क्रिएट होता है? द वेरिएबल व्हिच इज एलोकेटेड बाय malloc, calloc, realloc, and in C++ it is new, and in Java it is new. That means the memory is allocated at the time of execution or at runtime is allocated at heap region. That means dynamically allocated variable. All the dynamically allocated variable are created in the heap region. All the local auto variable created in the stack region. All the static and external variable are created in the static region. All the constant are stored in the code region or the constant area where your code is stored, right? That is the overall concept of the memory organization. I am not going into the details. That is the part of the architecture. That is only concept relating to program. Let us go ahead. Hello sir. Yes.
Sir, whenever we return extern int j, that means it's going to be a global variable for throughout the program, no? No, 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 no. Absolutely not. Absolutely. So, sir, if I replace, Let me yes, sir. explain. Let me explain. When you are writing extern int j, that means the variable int j is declared externally. Extern int j meaning is that int j is declared or defined externally. Guys, please mute yourself. Otherwise, I will mute all. Okay. होता है ऐसे कभी कभी। अभी एक ऑनलाइन कोर्ट चल रहा था, कोर्ट में एडवोकेट ने बिना म्यूट किए जज को ही गाली दे दिया। जज बोल रहे उसको जल्दी म्यूट कर दो और ये पूरा कोर्ट को गाली दे देगा। ओके, एनीवे, डोंट डू दैट। टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, प्लीज मेंटेन द साइंटिफिक एटलीस्ट। अंडरस्टूड? सर एक्सटर्न एक बार समझा दीजिए ना, थोड़ा समझ में नहीं आया। मैं तो तब से समझा रहा हूं, अभी भी समझाऊंगा, डोंट वरी। अगर नहीं समझेंगे मैं आगे नहीं। अंडरस्टूड, दैट इज माय मेथड ऑफ। ओके, डोंट वरी। तो मैं फिर दोबारा बताऊंगा, दोबारा नहीं तो 10 बार बताऊंगा। जब आप नहीं समझेंगे सुनिए। एक्सटर्न int j का मीनिंग क्या? वॉइस कट रहा है सर। int j is सर आपका वॉइस वॉइस नहीं आ रहा क्लियरली सर। सर वो ऑडिबल सर नॉट ऑडिबल सर। हाँ गाइस, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो यू आर नॉट ऑडिबल। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट को अगर सुनाई दे रहा है तो मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक अगर सबको सुनाई नहीं दे रहा है तो मेरे तरफ से प्रॉब्लम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है सर। आपको नहीं सुनाई दे रहा है सर। सर सबको नहीं सुनाई दे रहा है, अभी प्रॉब्लम सही हुआ सर। सर। आपका इशू होता है सर कभी कभी। मुझे सर आप वो एयरटेल वाला सिम लगाइए ना। मुझे सबको, मैं सब यूज कर रहा हूँ, मैं माइक यूज कर रहा हूँ, मेरे लिप फ्रंट में है। अंडरस्टूड? मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, otherwise I cannot continue. Okay, let me start. Extern int j tells the compiler j variable is defined outside main. Where it is defined, it is the job of compiler and linker and the entire mechanism to find out it. It may be defined anywhere inside the main, but must be defined outside main. Main के बाहर। Guys, don't worry, मैं आपको टाइम दूंगा, आपको क्वेश्चन पूछने के लिए मौका दूंगा। प्लीज होल्ड योर क्वेश्चन। 20-20 में पूछेंगे तो सब स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे। थोड़ा सा आप क्वेश्चन लिख के रखो, मैं लास्ट को 10 मिनट 15 मिनट दूंगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे। थोड़ा सा अभी पेशेंस रखो, मैंने सबको म्यूट कर दिया। int j tell the compiler int j defined outside main. main के बाहर डिफाइन हुआ है। Now it is the job of linker to find out that definition and link j to main. जो जैसे मैंने पिक्चर में यहाँ पर बताया था, अगर ये आपका मेन कोड है, अंडरस्टूड, तो ये आपका j है, तो इस j वेरिएबल का जो भी वैल्यू है, नाउ इट इज एक्सेसिबल टू मेन। जैसे मैं एग्जांपल अभी दिया था, सपोज मैं आपके पास बैठा हूं, मैं आपका टीचर नहीं बन जाऊंगा जब तक ऑफिशियली कोई आगे आपको नहीं बताएगा, या अथॉरिटी आके, एडमिनिस्ट्रेशन का अथॉरिटी आके, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर का अथॉरिटी आके नहीं बताएंगे कि मिस्टर एक्स इज योर टीचर, right? Mr. X is your teacher. He will teach you C or data structure, whatever it may be. Then there will be a relationship between us. Teacher and student का एक relationship create होगा। हम पास में बैठे थे, but you were not accessible to me. I was not accessible to you. So when the link established, link means teacher and student का link जब establish हुआ, now you can ask me question and I can access you, you can access me. So that information is required. That means यही इंफॉर्मेशन इस int j के जरिए हमने कंपाइलर को बता दिया। That means wherever j is declared outside main function, now accessible to main. इसके ऊपर 5 एग्जांपल है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपका सारा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। डोंट वरी, प्लीज हैव पेशेंस। तो अभी क्या होगा, लेट मी प्रोसीड विथ। तो ये हो गया डिक्लेरेशन, इट इज जस्ट ए डिक्लेरेशन। दैट मींस कंपाइलर अभी इस लाइन को इग्नोर करेगा। दैट मींस जैसे आपको मैं बता दूं, सपोज आप मुझे ये लिखने दीजिए, int font void या int, let me write this. Can anyone tell me what is the, let me allow you to unmute. Okay,
Can anyone tell me what is the meaning of this line? What is the meaning of this line? Declaration of function. This function declaration. Declaration of function, Declaration. जिसको आप बोलते हो prototype और signature of the function. Remember these Yes, sir. two technical words: signature of the function or prototype of the function or declaration of the function. That means आपने compiler को एक intimation दिया. Besides main, there will be another function fun which will take a integer value and returns nothing. This is a prior information given to whom? Compiler. That means when you call the function fun, and pass some value, now compiler will acknowledge your call because compiler already got the prior information about the function fun, right? अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, यहां पर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, सीधा आप कॉल करेंगे, compiler will produce error. What is this function fun? I do not know about, because compiler is only aware about one function, that is main. Besides that, there is another mechanism. आपके पास दो चॉइस है. अगर फंक्शन को मेन से पहले डिफाइन कर दोगी, तो फिर डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. सपोज आप लिख देंगे int I, then declaration is not required, जो भी है, because during compilation compiler will encounter with this line first before main से पहले इस लाइन को वो कंपाइल करेगा, तो यहीं पर उस लाइन से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया. That means there is a function fun which will take a integer value and returns nothing. So this line is considered as declaration as well as definition because it follows a block. जब main के अंदर आप कॉल करेंगे, then compiler will help you to transfer the control to the respective block where it was originally present in the memory. अगर आप इस definition को नीचे लिखेंगे यहाँ पर without declaration, then it will encounter error in this line, because without declaration you cannot call a function because compiler is unable to recognize your user defined function. Compiler can only recognize main, इसीलिए declaration देना पड़ता है. Void fun int, that is just a declaration to tell the compiler that means there will be a function fun which will take integer value and returns nothing in this program. So when you call the function, compiler already have the information about fun and what type of input it will take and what type of value it will return. So when you call the function, it will just transfer that value to the respective definition, right? इस तरह यहाँ पर declaration होता है, उसी तरह यहाँ पर भी ये declaration हो गया. That means ये declaration locally हुआ है. आप पूछेंगे सर इसको अगर हम globally कर देते, यहीं पर कर देते, तो अगर आप main से ऊपर डिक्लेयर करेंगे तो फिर ये external लिखने की जरूरत नहीं है, because by default it is global variable. By default it is global variable. By default it is external variable. External keyword is not required or it is redundant. That means ये declaration भी हो गया, definition भी हो गया. जैसे यहाँ पर आप main के अंदर int I लिखेंगे, int I equal to 5 लिखेंगे, तो this is declaration and definition. ये declaration भी है, definition भी है. यहाँ पर भी ये declaration है and definition है. लेकिन इसी को अगर आप main के अंदर डिक्लेयर करते हैं, यहीं पर आप लिखते हो extend. Guys, remember this. If you are writing extend, then you cannot write. Sir, INTJ definition कैसे हो गया sir? Second line. Because in declaration, in a global variable declaration, default value is 0. When you declare a variable, memory space is already defined and some default value 0 is initialized to it, right? Okay sir. तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, ये भी डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन है. ये लोकल वेरिएबल है, ये ऑटो है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये एक्सटर्न है. ये भी डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन है, ये भी डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन है. यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होगा एंड इसका स्टोरेज क्लास ऑटो होगा, ये स्टैक में क्रिएट होगा आई एंड ये स्टैटिक एरिया में क्रिएट होगा. एंड ये जो वेरिएबल j है, इट विल रिमेन इन द मेमोरी टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, बट लोकल वेरिएबल i विल रिमेन इन द मेमोरी टिल द मेन ब्लॉक इज एक्टिव. तब तक मेन एक्टिव है, तब तक i रहेगा, लेकिन j जो है टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम दे विल रिमेन इन द मेमोरी, राइट? दैट इज द डिफरेंस. ओके, अभी आप यहाँ से सर ग्लोबली जब j को डिफाइन कर रहा हूँ और एक्सटर्न नहीं लिख रहा हूँ, फिर भी ये एक्सटर्न ही होगा. हाँ, बाय डिफॉल्ट. जैसे आप नहीं समझ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जब आप यहाँ पर लिखते हो ऑटो INTJ, ये ऑटो वेरिएबल हुआ या नहीं? इफ यू डोंट राइट ऑटो, इट इज ऑटो और नॉट? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन. If by default it is auto, in the same way, if you write By default it is external. then it is also by default external.
So no need to write the keyword extern because by default it is a global variable and accessible to the entire program. Entire program means आपकी प्रोग्राम में अगर 10 फंक्शन है, सारे फंक्शन को ये accessible हो जाता है, right? And इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है. That is the concept. Am I clear, guys? सर लोकल ब्लॉक के अंदर अगर डिक्लेयर करेंगे तो सर उसका इनिशियलाइजेशन बस नहीं होगा, ओनली डिक्लेरेशन रहेगा. हाँ, अगर मैं यहीं पर एक्सटर्न INT J लिखता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके. If you are declaring extern INT J here, that means you are giving instruction to the compiler. Int J is defined externally. This is not definition. This is just declaration. In declaration, memory is not allocated. In definition, memory is allocated. Now it is the job of the linker to link J and link it to main function. मेन फंक्शन को लिंक करेगा. तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू असाइन करने के लिए कोशिश करेंगे, will produce error. देख लीजिए थोड़ा एरर आ गया. J has both extern and initializer. क्या बता रहा है guys? Can you see the error message here? Yes sir. J has both extern and initializer. That means extern के साथ आप initialize नहीं कर सकते. आप extern हटा दो, valid है. Extern हटा दो, it is valid. Understood? And ये लाइन जो लिखा था इसलिए एरर आ रहा था. फॉन्ट नहीं है. अंडरस्टूड? अभी कोई एरर नहीं आएगा. एंड एक्सटर्न लिखो एंड इनिशियलाइजेशन हटा दो. ये वैलिड हो गया. एरर 0 वार्निंग 0. अंडरस्टूड? तो लिखो यहाँ पर अगर INT J इक्वल टू 5 लिखेंगे तो यहाँ पर ये डिफाइन हो गया. वैल्यू J 5 है. तो नाउ दिस J विल बी एक्सेसिबल टू द मेन फंक्शन वेयर J इज यूज्ड. The value of J 5 is accessed. तो अभी आप मुझे बताइए इसका आउटपुट कितना होगा? 15 सर. 15. Exactly 15 होगा. 15 सर. Yes. तो देख लीजिए थोड़ा फटाफट. सर सपोज डेफिनेशन हम हटा देते तो क्या होगा? अगर डेफिनेशन हटा देंगे तो देख लीजिए क्या आ रहा है. आपने वादा किया था, वादा निभाया नहीं, तो आपको कोर्ट लेके जाएगी या नहीं? यस सर. तो वही हुआ, आपने वादा किया, डिक्लेयर किया, लेकिन डिक्लेरेशन तोड़ रहे हैं तो आपको घसीटा. अंडरस्टूड? कोर्ट लेके जाएगी तो एरर हुआ. सर आपने एक्सटर्न एंड वॉइड मेन के अंदर डिक्लेयर किया. सपोज हमारा एक और फंक्शन होता ग्लोबल एरिया में. वो आपका क्वेश्चन का और एक एग्जांपल है. डोंट वरी, मैंने यहाँ पर 5 एग्जांपल बताया. थोड़ा सा धैर्य रखो. अभी आप मुझे बताइए अभी इसका आउटपुट क्या होगा, जल्दी बताओ. आई एम गिविंग यू 10 सेकंड सबको. 10 सेकंड से ज्यादा नहीं है. ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है. 18 सर. 0. Sir 13 will be the answer. 13 sir. 13 sir. ना डिक्लेयर नहीं एरर आएगी. 18 को ग्लोबली डिजाइन किया यार अंदर 15. एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ. स्क्रीन बैकग्राउंड व्हाइट कर देंगे, स्क्रीन टेक्स्ट ब्लू कर देंगे. ओके, नाउ विजुअल इज इट इज 18. आउटपुट इज 18. चलिए, नथिंग इज देयर. दिस इज जस्ट ए ग्लोबल वेरिएबल I इक्वल 5. I इज एक्सेस्ड हियर. I का वैल्यू 5 था, वही 5 एक्सेस होगा. बाकी J यहाँ पर 10 इनिशियलाइज हुआ था, लेकिन आपने उसको मॉडिफाई करके 13 कर दिया. Once the value variable J is modified, तो modified value is accessed. So there is no 10 मेमोरी में नहीं है. 10 override by 13. Understood? So now 13 plus 5 is 18. Understood guys? Yes sir. Okay. देखिए ये जो आप एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे सर अगर कुछ मल्टीपल फंक्शन होगा. यहाँ पर कोई मल्टीपल फंक्शन नहीं है, मैंने मल्टीपल ब्लॉक डाला है. काफी बढ़िया क्वेश्चन है. तो आप मुझे बताएंगे इसका आउटपुट क्या होगा? थोड़ा सा एक में हेल्प करता हूँ आपको. एक सेकेंड, नीचे वाला लाइन विजिबल नहीं हो रहा. हाँ अभी विजिबल हो गया. इतना ही जितना आपकी स्क्रीन में विजिबल हो रहा है
उतना ही कोड है, उसके नीचे मेन फंक्शन का एंड है। जल्दी बताओ आउटपुट। सर हम लोग एक ब्लॉक के अंदर 10 20 10 ग्लोबल वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं? वही तो मैंने क्वेश्चन दिया है। सर एरर आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन तो दो वही बार दिया हम है। लोग एक्सटेंड को डिफाइन कर रहे हैं सर, आई को एक्सटेंड डिफाइन करे 2 बार, ऑलरेडी एक बार डिफाइन हो चुके हैं सर। और डिक्लेरेशन है सर, डेफिनेशन नहीं है, एरर 10 तो नहीं 20 10 होगा सर। ओके ओके ओके, हमारे पास कंपाइलर है, कंपाइलर जी से लॉक पूछिए। चेंज हो रहा है। No error, no warning. Error is 0, warning is 0. That means code is perfectly fine. Let us execute it. 15 20 15 sir। 15 35 10 10. 35. Okay. Guys, my output screen is visible to you? Yes sir। Okay. 15 35 10 10. Is there any doubt? Shall I explain this? No sir, Yes, no sir। sir. Guys, do you need explanation? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hold on. Okay. Okay. Let me explain. Let me close it. Okay. देखिए, थोड़ा सा बनाते हैं यहाँ पर। ये आपका मेन ब्लॉक है। मेन ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जे। J equal to 5. Now guys, tell me, this J equal to 5 is now accessible to this block? Yes or not? Yes sir। And also Yes, sir. accessible to this Yes, sir. block? But Yes, in sir. this Yes, block, sir. another local variable J is declared. That's Declared, why this variable will be hidden. Because local variable always having highest priority than the global variable. Right? Yes, sir. Understood? सर बीच बीच में आपका वॉइस कट जा रहा है। So Guys, voice am I break. audible? Yes, वॉइस sir। लेकिन सर आपका वॉइस बीच में कट जा रहा है, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट में जो बोले। सर आप जो भी बोले लास्ट का 3-4 लाइन उसको पार्डन कर दिए सर। Okay. Let me write it first, then I will explain. Don't worry. I'm not explaining now. I'm just trying to write everything as far as this code is concerned. Right? Just look at the screen. One block is there. And this is block 1. This is B1. This is B2. This is B3. B3 means block 3. This is block 2. This is block 3. This is block 1. This is block 2. This is block 3. And this is your main block. Inside main, 3 blocks are there, right? So this is your global variable and this is a local variable J. Now J is accessible B1, B2, B3. Now come to the first block. Inside first block, external int I is there. That means now this variable I is now, this variable I is now accessible to B1, right? Because external int I is there. And also this variable J is also accessible to B1, right? When you are writing printf I plus J, that means I is 10, J is 5, that is 15. So I plus J is 15 is printed. 15 is printed. Right? And come to the second block B1. In second block B1, there is a local variable J equal to 10. That means here it is J equal to 10. So now it is suppressing the variable J which is declared inside main because it has its own local variable J equal to 10. When you are writing external int I,
Now this variable I is again linked to block 2, right? Again guys, I missed one line, line number 7. मेरा कॉल आया तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया. I plus equal to j. I missed that line. I plus equal to j means the j is 5, I is 10, I plus 10 is 15. So now the global variable I is updated to 15. Am I right, guys? I was just missed this line. मैं इस line miss कर दिया था. पहले 15 प्रिंट हुआ, 15 प्रिंट होने के बाद I plus equal to j हो गया. I plus equal to j means I will be updated. I plus j. I equal to I plus j. तो I में 10 था, j में 5 था. 10 plus 5 15 हुआ. 5 का लास्ट वैल्यू 15 हो गया. Right? Then come to the second block. Second block means line number 10. Line number 10 में int is equal to 10. One local variable is declared inside block 2. Block 2 make local variable j equal to 10 declare हुआ. Then external int I, that means the same I is accessible to block 2. Then I plus equal to j. I plus equal to j means now 15 plus j. J means which j? This j. Block 2 j. Block 2 में जो j है उसका वैल्यू 10 है and I का वैल्यू 15 है. 15 plus 10 कितना हुआ? 25 हुआ. 25 I में reassign हो गया. Because global variable can be modified by all blocks and all functions. That's why it is known as global variable. Now printf I plus j. I is 25, j is 5. 25 plus 5 कितना हुआ? 30 हुआ. Sir, j is 10 J is 10, sir. in the local variable. Sorry. मैंने गलत वैल्यू को ऐड कर दिया. ठीक है. So here 25 plus 10, it become 35. 35. Right. Now come to new block. Now come to block 3. When you come to block 3, the block 2 variable will be automatically released. Automatically released means local variable का concept क्या है? When you go out of scope, all the local variable also released from the memory. Block 2 के अंदर variable था वो सब dead हो गए. Right. तो इसके अंदर int I equal to j. That means यहाँ पर एक local variable I create हुआ and equal to j लिखा हुआ है. तो कौन सा variable का access करेगा? इस वेरिएबल का एक्सेस करेगा. 5 वेरिएबल का एक्सेस करेगा. राइट. I में j, तो j का वैल्यू कितना था? 5 था. तो इस I में 5 आ गया. Now this global variable I is not linked to block 3. block 3 को लिंक नहीं हुआ क्योंकि इसका खुद का लोकल वेरिएबल I है, तो इसलिए ग्लोबल वेरिएबल लिंक नहीं होगा. राइट. तो printf I plus j. तो नाउ I खुद का लोकल वेरिएबल I है एंड j उसी मेन ब्लॉक का वेरिएबल j है. तो 5 plus 5 कितना हुआ? 10. तो ये 10 हुआ. आउटपुट 10 हुआ. 10 होने के बाद फिर j प्लस इक्वल टू I. तो j मींस ये वेरिएबल j. तो j प्लस इक्वल टू I, दैट मींस j में 5 है. 5 प्लस 5 10 हुआ. तो इसका वैल्यू हो गया 10. तो नाउ जो वेरिएबल j मेन का था वो 10 हो गया. अभी इस ब्लॉक से बाहर आ गए. जब ब्लॉक से बाहर आ गए तो ये वेरिएबल भी डेड हो गया. तो नाउ printf j. तो j का वैल्यू कितना है? 10 है. तो फिर दोबारा 10 प्रिंट हुआ. Is it clear, guys? So one question. Sir, j plus equal to I ये तो ब्लॉक 3 के अंदर था, तो वो अपडेट कैसा होगा? कहाँ पर? ये हाँ. तो वेरिएबल जब अपडेट हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या फिर रीइंस्टेट हो जाता है जब ब्लॉक से बाहर आते हैं? आप घर के अंदर खाना खाए, जब आप घर के बाहर आएंगे वो खाना क्या घर के अंदर छोड़ के आ जाएंगे? खाना आपके साथ आएगा या नहीं? सर लेकिन वो ग्लोबल वेरिएबल का हम लोग वैल्यू लेंगे ना सर, क्योंकि वो ब्लॉक के बाहर है. कौन सा ग्लोबल वेरिएबल? सर लास्ट में जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है सर. लाइन नंबर बताइए. लाइन नंबर 20 सर. 20. तो लाइन नंबर में printf j लिखा हुआ है. इसमें कौन सा ग्लोबल वेरिएबल है? ये सर j. यस सर. तो ये तो अपडेट हो चुका है ना 10 को. इस लाइन नंबर 18 में हमने अपडेट नहीं किया. और एक डाउट है. हाँ. B2 जो हम लोग का सेकंड ब्लॉक है वहां पे एक्सटर्न इंट I, तो एक्सटर्न इंट मतलब तो 10 होगा I. एक्सटर्न इंट I मींस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है int I इज डिफाइंड आउटसाइड मेन. मेन के बाहर जो I है वही I एक्सेसिबल होगा. अंडरस्टूड? उस I का वैल्यू जो भी होगा उसी टाइम वही वैल्यू यूज होगा. अंडरस्टूड? तो उस ब्लॉक से B2 से पहले B1 में मैनिपुलेट हो चुका है ना सर. 10 वैल्यू. एक्सटर्न int I का मीनिंग क्या? क्या हुआ?
सो बिना डिक्लेयर किए B2 में अगर आई यूज करते तो एरर नहीं देता ना, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल को यूज एक सेकंड क्या था, वही था हमारा आउटपुट आ रहा था 15 35 10 10। सो बी हाँ सर लाइन 11 को रिमूव करके एक बार हाँ वही सर 11 अगर रिमूव करते तो क्या दिक्कत है? लाइन एक सेकंड, लाइन 11 को अगर रिमूव करेंगे तो आप मुझे उस ब्लॉक के अंदर बताइए आई नहीं है ना, जो आई है ये आई कौन सा आई एक्सेस होगा? सर बट एरर आई नहीं तो आएगा। B1 में एक्सटर्नल ग्लोबल है वेरिएबल ना। का ग्लोबल स्कोप देखो होता है, देखो आपको देखो लगता एरर आएगा, देखिए आई इज ऑन साइड, मेन के बाद लिखा ना, मेन के बाद लिखा हुआ थोड़ी गाइस आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपकी आवाज कट रहा है एंड ऑल द रेस्ट स्टूडेंट्स विल फील अनकंफर्टेबल। तो आई अनडिक्लेयर्ड दिखा रहा है या नहीं? दैट मींस इस ब्लॉक के अंदर आई डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, आपने यूज कर दिया, ठीक है। अगर मैं एक्सटर्नल आईएनटी आई लिखूंगा, नाउ इट विल एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल उससे पहले डिक्लेयर होके यूज हो चुका है। ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये इसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ, उससे पहले भी ये डिक्लेयर हो चुका है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इस खास ब्लॉक में एक्सटर्नल आईएनटी आई जब लिखा, इसका मतलब क्या था? आईएनटी आई इज डिफाइंड आउटसाइड मेन, दैट मींस ये मेन से बाहर डिफाइन हुआ है, उसका वैल्यू 10 था, हमने यहाँ पर 10 प्लस जे दैट मींस 10 प्लस आई 15 कर दिया, तो यहाँ पर ये 15 हो गया, दैट मींस हियर इट इज मॉडिफाइड टू 15, तो नाउ इट इज नो मोर 10। जब आप इसके अंदर आएंगे, सेकंड ब्लॉक के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल j का वैल्यू 10 है एंड i प्लस इक्वल टू j मींस इस ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू i का वैल्यू 15 है, तो 15 प्लस 10 कितना हुआ? 15 प्लस 10 कितना हुआ? 25। तो ये 25 हो गया फिर, अंडरस्टूड। तो हियर i प्लस j जब प्रिंट करेंगे तो 25 प्लस 10 35 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। 35 प्रिंट होने के बाद जब इस ब्लॉक से बाहर आएंगे तो इसका जो लोकल वेरिएबल है ये डेड हो जाएगा। सारे लोकल वेरिएबल ब्लॉक एंड होने के बाद डेड हो जाते हैं, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल है वो तो अभी भी मेमोरी में है, राइट। जब इस ब्लॉक के अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल आई क्रिएट हुआ, तो इसी लोकल वेरिएबल आई में ऊपर जो ग्लोबल वेरिएबल जे था इसका वैल्यू असाइन हुआ, तो इसका वैल्यू 5 था, तो इस आई में 5 असाइन हो गया एंड 5 प्लस 5 10 प्रिंट हो गया। 10 प्रिंट होने के बाद फिर j इक्वल टू j प्लस इक्वल टू आई, दैट मींस j में 5 है, i में 5 है, 5 प्लस 5 10, ऊपर यहाँ पर 10 हो गया, अंडरस्टूड। तो जब बाहर आके प्रिंट j प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट होगा। वेरिएबल एक बार अपडेट हो जाता है, दोबारा फिर जो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हो ना अनडू रिडू, ऐसा नहीं होता है। वंस इट इज अपडेटेड मींस न्यू वैल्यू विल रिमेन, अंडरस्टूड। फिर ये रिडू होके प्रीवियस वैल्यू को नहीं आएगा। आप ये नहीं बोल सकते ब्लॉक से बाहर आ गया तो इसलिए रिडू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, समझ गए। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिए, इसका देखिए, इसका आउटपुट जल्दी बताइए थोड़ा जल्दी। वेरी गुड। 2025 होगा पहला वाले का, पहला 15-25 है। 2025 2025 2025 फर्स्ट 2025 25-27 25-20 Jyoti Prakash Panda. Okay guys, let us compile. No error. 25 20 25 45 25 45, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड कोड आपको मिलेगा मैक्सिमम 1 to 2 मिनट। अभी जो आपकी सीनियर दे रहे हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, they are also facing the same difficulty. Lots of practice is required. Only knowing the concept is not enough. Concept तो क्लियर होना चाहिए, जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करो। आप मत पूछो कहां से करो, गूगल तो एंटायर डिक्शनरी है, कहीं पर भी टाइप कर दो तो क्वेश्चन आ जाता है, अंडरस्टूड।
So 25, 20. Asa, is there any explanation is required? Guys, do you need any explanation? Absolutely not, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. ठीक है. तो ओके चलिए, कुछ स्टूडेंट को चाहिए, कुछ स्टूडेंट को नहीं चाहिए. Let me take 2 minutes to explain this. Let me take 2 minutes. I equal to 5, ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो ऊपर लिख देता हूँ. एंड ये मेन है. मेन के अंदर एक वेरिएबल हो गया j इक्वल टू 10, एंड उसके अंदर और एक ब्लॉक है, एंड उसके नीचे भी और एक ब्लॉक है, राइट. एंड हियर फ्रॉम लाइन नंबर 7, now the global variable I is access to the entire main block. That means it is accessible to the inner block 1 and also accessible to the inner block 2. ये inner block 1, inner block 2, right? So I plus equal to j plus equal to 10. What does it mean? पहले क्या होगा ये? I plus j plus equal 10. to j equal to j plus 10. j equal to j plus 10. j में कितना है 10, तो 10 plus 10 कितना हुआ 20. That means पहले j का वैल्यू अपडेट करो 20 को, वही 20 ऐड करो i में. i का वैल्यू कितना हुआ 25, तो i का वैल्यू हो गया 25. तो printf i j, printf i j. So now value of i is 25, j is 20. तो 25 and 20 प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद इस ब्लॉक से हम बाहर आ जाएंगे. जब इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे तो कोई लोकल वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो देयर इज नो इशू. तो और एक इनर ब्लॉक 2 के अंदर आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल i डिक्लेयर हुआ, तो उसको क्रिएट करो विद द वैल्यू 20 and j plus equal to I plus equal to 5. That means j plus equal to I plus equal to 5 means I equal to I plus 5. में कितना है 25. तो 25 plus 5 कितना हुआ 30. तो पहले I को 30 करो, अपडेट करो, फिर उसी I को j के साथ ऐड करो. तो j का वैल्यू यहाँ पर कितना हुआ, j का वैल्यू कितना हुआ, सॉरी होल्ड ऑन. लोकल वेरिएबल आई दिया हुआ है, लोकल वेरिएबल आई दिया हुआ है 25 होगा. हाँ यस. यहाँ पर लोकल वेरिएबल 20 है, तो लोकल वेरिएबल 20 एक्सेस होगा. तो 20 यहाँ पर j प्लस इक्वल टू 25 होगा. 20 प्लस 5, 25 वेरिएबल 25 हुआ, यानी ग्लोबल वेरिएबल का अपडेट कर दिया 25 हुआ. तो 25 j के साथ ऐड होगा. 25 प्लस द वैल्यू ऑफ j कितना हुआ 45 हो गया j में 35. अभी printf i j, तो इस i का वैल्यू कितना है 25 and 45. तो हमारा ये एक आउटपुट था एंड ये दूसरा आउटपुट हुआ. एंड उसके बाद ब्लॉक से बाहर आ जाओ. तो ब्लॉक से बाहर आ जाओगी तो ये वेरिएबल डिलीट हो गया, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल था. वंस यू कम आउट ऑफ द ब्लॉक ऑल द लोकल वेरिएबल विल बी डेड. तो printf i j, तो इस अभी ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस होगा. ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू कितना है 25 है, 45 प्रिंट हुआ, एंड j 45 है, तो 45 प्रिंट हुआ. समझ में आया? यस सर. यही आउटपुट था, हाँ या नहीं? यस. देख लीजिए थोड़ा. 25 20 25 45 25 45 यही था. 25 20 45. सर आपका वॉइस पूरा कट गया है सर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. Can I tell the answer of this question? Ten 0. Yes sir, 10 0. 10 0. 10 sir. 10 0. Okay. 10 backslash n. Okay, so let me recompile it and execute it. It will produce the output 10 10 10. I think it is very simple, no need to explain this further, because default value of the global variable is 0. So now the global variable
नाउ सी गाइस, तो इधर ठीक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है आई का वैल्यू अभी 0 है। So now external int I is written there. That means this I is now linked to the entire main block. Still there is a inner block. Inner block के अंदर भी आपने external int I लिखा तो inner block को भी visible होगा। I equal to 10 now. This 0 is overwritten by 10. तो printf I तो 10 print किया तो लाइन नंबर 8 में 10 प्रिंट हुआ। उसके बाद ब्लॉक से बाहर आए, अगेन printf I का वैल्यू once updated means that updated value will remain there. 10 प्रिंट होगा तो फिर और एक इनर ब्लॉक के अंदर आएंगे, फिर अगेन एक्सटर्नल इंट आई, नो इशू। अगर आप एक्सटर्नल इंट आई नहीं लिखते तब भी एक्सेसिबल होता। फिर printf I, राइट, तो printf I लिखेंगे तो ये फिर 10 प्रिंट होगा। printf I का वैल्यू 10 है। मैं यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ आपको, सपोज यहीं पर हम कमेंट कर देंगे, कोई एरर है, कोई वार्निंग है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आपने इस सारे ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल इंट आई लिख दिया। व्हाट डज इट मीन? नाउ I is linked to obviously जितना इनर है that is also visible to it। सर अगर मेन के अंदर विजिबल है तो मेन के अंदर जितना इनर ब्लॉक है सबको विजिबल है। इज इट क्लियर? सर एक बार फिर से बता दीजिए, वॉइस कट गया। सर फिर से बता दिए सर, वॉइस कट गया। My point was that if you remove this line external int I and external int I, still the output will remain same. Still the output will remain same. See, 10, 10, 10. That means this two line was added just to disguise you, right? Just to confuse you. Why these two line are added? There was no meaning of writing this two line external int I because आपने ऊपर external int I लिख दिया। अगर यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे फिर कोई एरर होगा। यहाँ पर भी एरर है, नीचे भी एरर है। अंडरस्टूड? यहाँ पर भी printf I एरर आएगा, हर जगह पर एरर आएगा बिकॉज I इज नॉट एक्सेसिबल। अगर देखो यहाँ पर आप हटा देंगे तो लुक एट दिस, नीचे आया। दैट मींस यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर तो आपने एक्सटर्नल इंट आई लिख दिया, I इक्वल टू 10, तो printf I जब ब्लॉक से बाहर आ गए तो printf I इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों? ना आपने एक्सटर्नल इंट आई लिखा था, आपने इसी ब्लॉक के अंदर लिखा था। दैट मींस यही एडवांटेज है एक्सटर्न का। अगर वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करने के बजाय मेन के नीचे डिक्लेयर करोगी, यू कैन रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ दैट वेरिएबल टू स्पेसिफिक ब्लॉक। अगर आपने मेन से पहले डिक्लेयर कर दिया तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी एक्सेसिबल टू द ऑल ब्लॉक, राइट? अगर आपने मेन के नीचे डिक्लेयर किया, जिस ब्लॉक को आप एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हैं उसी ब्लॉक के अंदर एक्सटर्नल इंट आई लिखिए, दैट विल बी एक्सेसिबल। जिस ब्लॉक को आप एक्सेस नहीं देना चाहते हैं उस ब्लॉक के अंदर एक्सटर्नल इंट आई मत लिखिए, दैट विल बी नॉट एक्सेसिबल। इज इट क्लियर गाइस? समझ में आया? Yes, sir. इस ब्लॉक Yes, के sir. अंदर Yes, sir. एक्सटर्नल इंट नाउ दिस डबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल टू दिस इनर ब्लॉक, बट इसके अंदर हमने नहीं, इस मेन के अंदर एक्सटर्नल इंट नहीं है तो इसलिए मेन के अंदर बीच में कट जा रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है बीच बीच में। Sir, you are not. बीच में कट जा रहा है सर। Guys, some students are listening me, I think, without any interruption. If there are some problem, I think some issue are there in your side. Sir, it's your issue, sir. No, sir, it's your issue. और आपका All problems are because somebody is able to listen, sir. It's your issue, sir. It's your issue. साउंड का क्वालिटी जो वीक हो जा रहा है बस। Yes, sir. अच्छा, एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिनको एक क्वेश्चन का आंसर ठीक है तो यस है, तो आप मुझे यस बताएंगे। मैं कितने स्टूडेंट को क्लियरली ऑडिबल हूं, आप बताएंगे? गाइस, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. This is the final question. We are going to end the session. This is the final question. Just find out the output. थोड़ा सा मुझे एक सेकंड मुझे दीजिए। Now it is visible to you. You find out the output. Take 2 to 3 minutes.
and tell the answer. Guys, what is the output? 15, 10, 15, 18, 15, 10, 15, 10, 15, 10, 32, 10, 5. 12, 22. 18, 15, It was a little bit lengthy. 18, 15, 13. Same, sir. Same. Answer is Yes, sir, yes, sir. visible in front of your screen. Yes, sir. Same. Guys, it is clear. 18, sir. Yes, sir. Clear, Yes, sir. sir. Yes, sir. Just take the snapshot of this question. If you have any doubt, then you can ask me. Okay, guys, sometimes. 13 क्यों है सर? Yes. Why 13? Why 13? क्योंकि सर वो तो फर्स्ट ब्लॉक में j equals to 13 हो गया था. Okay. Hold on. I'll take 2 minutes to explain. Hold on. See here. Again, I have to draw this. Okay. There is a global variable I equal to 5. Okay. And j equal to 0. Right? Extern int j, come to here, j equal to 13. Right? Now this variable has no value. Printf I plus j. Printf I plus j. 13 plus 5 is 18. What was the output of the first printf? 18. 18, sir. आपके पास आउटपुट लिखे हैं आप? आउटपुट लिखे हैं? Sir, Yes, sir. 18, हाँ, sir. 15, 13, मुझे याद 17, नहीं है। 39. एक सेकेंड। 18, 15, ओके, यहीं पर रखिए। 18, 15, 13, 29. Okay. Then come to here, int j equal to 10. So inside the first block there was no variable. Over. Come to the second inner block. In second inner block there is a local variable j equal to 10. Printf I plus j. I is global variable. So j is local variable. So 5 plus 10 is 15. So 15 is printed here. Right? Then I plus equal to 7. So now 5 plus 7 is 12. Now global variable is modified. 12 now comes out of the block to another inner block. So here the local variable is also dead. Now here extern int j. Extern int j means this is accessible. Now printf j is 13. So now this is 13. What was the answer? Yes, sir. 13. 13. 13. Now j equal to I plus 5. J equal to I plus 5. So here I is global variable 12. 17. Yes, 17. So now j is 17. सर j 13 था, उसके बाद तो फिर सर सेकंड वाला ब्लॉक में j 10 भी तो हो रहा है ना? हाँ, क्या हुआ? लेकिन वो लोकल अपडेट हो गया ना? लोकल है वो, लोकल Variable. That is local variable. It was local variable. Yes, sir, Updated local in the local variable, local memory. Once you comes out, so that variable is dead. In this block, we are accessing the global variable. Global variable में 13 था.
तो j इक्वल टू i प्लस 5, तो i में 12 था, तो 12 प्लस 5 17, तो 17 असाइन होगा j में, तो j का वैल्यू निवल हुआ 17. तो नाउ printf i plus j means both I and j are global variable. So 12 plus 17 is 29. 29. So answer was 29. Sir. Okay. So now printf ij. So nothing is there. So printf I is 12 and j is 17. 17. Sir, Yes. sir, in line number 23, it is said int j equals to 10. See the output. Sir, won't the 18, 15, 13, 20, 13, 29, yes, 12, sir. 17. Yes. So that is the problem, sir. That j's value 13 is where my doubt is. Which line? Repeat, please. Sir, in line number 23, int 23. j equals to 10. Yes, sir. Line number 23. Yes, sir. J equals to 10 is written. I have already told you now that line will be ignored because another variable j is globally declared and that is automatically accessible to men. Understood? No, I sir. have already told you this line will be neglected by the compiler because j is already declared globally and by default it is external variable and that will be linked to this variable. If you delete this j, then now this 10 will be accessed, right? Okay. Okay. Okay, thank you, sir. So, Yes. so Yes. sir, if the local variable in line number 11 is Line updated number by 11. the value. Guys, Yes, sir. our topic is over. Those who want to leave the class, you may leave the class. Those have doubt, you can stay here and ask me the doubt on this question. Otherwise, we are winding up this session for today. Right? So you can leave the class. Yes. आप पूछिए. So, Yes, पूछिए. Line sir, number. in this 11, Line number 11. Yes. sir, if the value of local variable j is updated, will it be reflected in the line number 16? Line number 16. Repeat, Yes, please. sir, in printing. Sir, in line number 11, if the value of j is updated, local variable j, This is, so you are will telling it it is local variable. Its value is only j? accessible within that block. It is that variable is not accessible outside that block. If that variable is not accessible, then how the value will be accessible? Understood? The name of the variable was changed. Guys, please mute yourself. If someone is asking question, guys, please mute yourself. Otherwise, background noise आ रहा है. सर वो से वेरिएबल का नेम सेम है तो स्कोप अलग है. आपकी घर में एक कुत्ता है जिसका नाम टमी है. मेरे घर में एक कुत्ता है उसका नाम टमी है. क्या कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं होगा ना. अगर एक ही घर में दो कुत्ता का नाम टमी रखेंगे तो कंफ्यूजन होगा. टमी बुलाएंगे तो दोनों कुत्ता आ जाएंगे. तो पॉइंट ये था, स्कोप अलग है. जब स्कोप अलग है तो सेम नेम रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. सर अगर लाइन नंबर 11 में j की जगह if सिर्फ j equals to 10 लिखे तो क्या दूसरे ब्लॉक्स में अपडेट होगा? यस अग्रवाल, आपका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है. आई एम नॉट ऑडिबल. सॉरी सर. हाँ यस, क्वेश्चन पूछिए थोड़ा. सर लाइन 11 में अगर int j की जगह सिर्फ j equals to 10 लिखे तो दूसरे ब्लॉक्स यस, अगर int j की जगह ओनली j इक्वल टू 10 लिखेंगे तो क्या होगा, यही पूछ रहे हैं. तो ग्लोबल दूसरे ब्लॉक्स में अपडेट होगा क्या? ग्लोबल वेरिएबल j विल बी अपडेटेड. यस, ग्लोबल वेरिएबल j यहाँ पर 13 हुआ था, यहाँ पर फिर दोबारा 10 हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. हाँ यस. डाउट इज सर, बोल रहे हो कि यहाँ पे अगर हम लोग लाइन नंबर 6 और 16 को हटा दे तो क्या होगा? 6 and 16 को हटा देंगे, कुछ नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ग्लोबल वेरिएबल है. ओके सर. मेन फंक्शन कुछ नहीं होगा. देखो कुछ हुआ, नो एरर, नो वार्निंग एंड आउटपुट. ओके. That was just given to you to confuse you. Understood? Okay. Thank you guys. I'm winding up the session. Thank you. Bye bye. Good night. Sir. Yes. Thank you, sir. One more. Thank you, sir.
एक्सक्यूज मी सर, एक चीज बोल दीजिए ना, वो चार जो ब्लॉक होता है ना, वो लोकल वेरिएबल हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं तब तो वो किस में जाता है, सॉरी स्टैक में जाता है। तो अगर जब ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब कहाँ पे जाता है? स्टैटिक एरिया, स्टैटिक एरिया मैंने पिक्चर करके समझाया था। एक्सटर्नल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल दोनों, एक्सटर्नल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, राइट? बिकॉज बाय डिफॉल्ट ऑल द ग्लोबल वेरिएबल आर एक्सटर्नल वेरिएबल, so they are created in the static area. Local variable जो ऑटो होता है वो स्टैक में क्रिएट होते हैं. Dynamically allocated variable created in the heap region, right? And register variable created in the CPU. और सर बोले सर रियलॉग एंड कैलॉग से वो जब क्रिएट होता है तब कहाँ पे होता है? हीप में dynamically allocated variable are created in the heap region. सर ये कहाँ डिफाइंड होता है ये सब डिफरेंट स्टोरेज क्लास? डिफरेंट स्टोरेज क्लास डिफाइन, डिफरेंट स्टोरेज क्लास सॉरी डिफरेंट स्टोरेज क्लास के जरिए हम डिफरेंट मेमोरी एरिया में वेरिएबल को प्लेस करते हैं। अंडरस्टूड? सर ये कीवर्ड्स है ना, तो ये डिफाइन कहाँ पे होता है सर? और कीवर्ड के अंदर कुछ मीनिंग है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो वही इंस्ट्रक्शन कंपाइलर को जब मिलेगा एक्सटर्नल इंट आई, that implies that variable will be declared or created in the static region. अगर आप static int लिखेंगे that will be also created in the static region. अगर आप ब्लॉक के अंदर कोई int लिखेंगे that will be created in the stack region. Understood? सर मैं पूछ रहा था ये कीवर्ड्स कहाँ पे डिफाइंड है ये? कंपाइलर के अंदर। ओके सर। हमारी प्रोग्राम और ये को सर इंटरप्रेट कौन कर रहा है? कंपाइलर। Yes. सर ये जो डिफरेंट मतलब एरिया है स्टैटिक हीप, ये कहाँ पे डिफाइंड होता है कि सर ये स्टैटिक एरिया या हीप एरिया है? मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लॉजिकली allocate some amount of memory considered as stack, some other amount of memory considered as static, some other amount of memory considered as your heap area, right? That is okay sir. Sir. Okay, sir. Sir, in the beginning you were. Hello. Sir, in the beginning you were talking about some modes of addressing, logical addressing. Sir, did you say shiftical addressing? Yes. Okay, so how many types of addressing are there? Sorry, sir. Sir, how many types of? आप डिटेल जाके बुक में पढ़िए, अभी मुझे थोड़ा छूट दीजिए। नहीं सर, मतलब क्या क्या एड्रेसिंग है, लॉजिकल शिफ्टिंग सर मैं देख लूंगी, बस क्या मतलब नाम है बस। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, मुझे थोड़ा एक फोन कॉल करना है। सर यहाँ पे अगर कर दिया था, काइंडली मुझे थोड़ा जाने दीजिए। सर यहाँ पे अगर लाइन नंबर 2 में नेक्स्ट क्लास में सर एक सेकंड सर ये वाला स्लाइड का डाउट है सर। क्या डाउट है यार? मुझे पूछ लेना है ग्रुप में, इंडिविजुअल या ग्रुप। 2 सेकंड लगेगा सर। पूछ लेना प्लीज, allow me to leave. नहीं रहता है क्या? Thank you guys. Thank you sir.